Assalamu alaikum. So once again we are in the city called Kuala Lumpur in Malaysia. So in this video today we'll go through a lot of different places जहाँ पे हम यहाँ की बड़ी फेमस यहाँ पे गार है बाटू केव के नाम से उधर जाएंगे. From there we will go to this twin tower famous Genting Tower in Malaysia. उसके बाद we will go to the famous food street in Kuala Lumpur जहाँ पे there are a lot of nice shawarmas, a lot of Malaysian food. So we decided to wake up a little bit in the afternoon and we decided to visit this place called Batu Cave. The hotel was really nice. It was about I think इनका कोई community का कोई Chinese New Year चल रहा है तो उसकी वजह से they have decorated that way. So we got into the taxi. जो बाटू केव है इनकी जो टेम्पल है वो थोड़ा सिटी से आउटस्कर्ट पे है. It's about 45 to 1 hour drive. अभी स्टिल जो है ना कोविड का कोई सीन है तो नहीं लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे इंटरनली ट्रांसपोर्ट में दे रिकमेंड कि आप जो है ना मास्क पहने लेकिन वी डिडंट हैड वन सो द ड्राइवर वाज वेरी काइंड इनफ. The short after that we arrived in this Batu cave. It's quite steep, quite in a high. There are a lot of steps that you have to take. Lekin stay in a video, you will go through it. It's basically a lot of different things to see within the place itself. So we arrived there, started walking towards that. वो आपको बाहर ही उतारते हैं क्योंकि टैक्सीज जो है ना वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं लेकिन आप ये है कि उससे आप आगे जो है ना वॉक कर सकते हो. So this is the place that it is very famous for their worships as well. There are a lot of temples एक तो बाहर भी हैं और दूसरा आप जो वो कलरफुल स्टेयर्स देख रहे हैं उसके ऊपर जाके अंदर गार के अंदर भी एक दो टेम्पल्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग बेसिकली क्लाइंब अप करके एंड दे पे देयर ट्रिब्यूट एंड दे डू देयर worships. So the one thing that I found at this place is actually pigeons. They have a most nice life here. क्योंकि ये ना तो डरते हैं आपसे और ना ये भागते हैं. आप लिटरली उधर से खाना उनके लिए बाय कर सकते हैं. आप अपने हाथ में रखेंगे दे विल लिटरली कम एंड सिट इन योर हैंड एंड दे एंजॉय देयर फूड. दे आर इन लार्ज वॉल्यूम और इनके लिए जो है ना परफेक्ट जगह है यहाँ पे. और अनदर क्रिएचर्स वन ऑफ माई फेवरेट वाज देयर इज मंकीज़. इट वाज अ लॉन्ग टाइम लास्ट टाइम मंकीज़ देखे थे जू में लेकिन इधर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वो तादाद में थे. तो वन मोर थिंग यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रेकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास कोई अपनी वैल्यूएबल्स हैं कोई फ़ोन है या कोई आपके पास बैग है या पासपोर्ट्स एंड एवरीथिंग यू बेसिकली कीप इट हाइडिंग क्योंकि यू नेवर नो किसी भी टाइम जो है ना इनके इंसिडेंट यहाँ पे काफ़ी होते हैं कि मंकीज़ जो आते हैं वो ये कंसिडर करते हैं कि आपके हाथ में फूड है एंड देन दे लिटरली टेक इट एंड गो अवे. सो वी हैव टू क्लाइंब अप ऑल दी स्टेयर्स. कितनी कलरफुल और ज़बरदस्त लग रही हैं और ये स्टेयर्स जो है ना ऊपर लेके वी हैव टू गो all the way up to see that car and the cave out there. So I took some food and started feeding the pigeons and at one point I had it in my hand and they were literally sitting on my hand itself. This is the temple that is at the down of right next to the stairs जहाँ पे लोग जो है ना obviously they are waiting for their worships and they have obviously different way of doing their worships. लेकिन यहाँ पे मलेशिया में ये है कि different sort of religion exist करते हैं despite कि it's considered to be the Muslim country लेकिन काफ़ी harmony है लोगों में. They respect each other, everyone's religion and everyone's you know whatever you have a freedom of do whatever you want to do which is good in any country. आप को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी फ्रीडम ऑफ वर्शिप्स एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स अ कंट्री ग्रेट. सो इधर जो है ना वी हैव टू गो ऑल द वे अप एंड इट्स नॉट इजी. बेसिकली स्टेप्स जो है ना अगर मैंने काउंट नहीं किए लेकिन अगर मैं काउंट तो एग्जैक्टली रफ नंबर में बताऊँ तो इट वुड बी अबाउट like 200 steps. लेकिन it's not that easy to basically climb. आपको you have to take a break in between. And you see this color, they are basically coloring the stairs already. They have a festival coming up next month and they are preparing for that big festival out there and it looks really nice actually. The colors जो है ना वो काफ़ी rainbow color में वो लोग बनते हैं and it's beautiful when you look from down. So I went halfway. उसके बाद I took a break and then started climbing up again
and at one point it was like really tiring. आप जो ना लिटरली इवन के वेदर अच्छा था 23-24 डिग्रीज, लेकिन ये कि ह्यूमिडिटी भी नहीं थी, लेकिन आप थक जाते हो अगर आपको आदत नहीं है थोड़ी मतलब ये क्लाइंब करने की, तो इट्स टायरिंग. And there we arrived inside the cave. It's still an entrance itself. यहाँ पे भी अंदर आपको एक दो टेम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे लोग आते हैं और दे लिटरली डू दे वर्शिप. लेकिन प्लेस itself जो है ना वो काफ़ी काम है. फॉर मी इट वाज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के आप केव के अंदर जाके ये सारा कुछ देखो, लेकिन जगह बड़ी काम थी. आपको वो साइडों से रोशनियाँ आ रही हैं और यू फील लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. एट द सेम टाइम आप अगर फेमिलियर नहीं हो तो ज़ाहिर है थोड़ा सा डर लगता है आपको, क्योंकि ये कोई आर्टिफिशियल मेड तो है नहीं चीज़, तो यू हैव टू बी केयरफुल. आई वाज लुकिंग अराउंड के एवरीथिंग वाज हैंगिंग अराउंड. पत्थर ही है ज़ाहिर है, कुछ वो पुराने, यू नेवर नो व्हाट्स गोना फॉल ऑन यू, क्योंकि ये मतलब प्रिजर्व ऐसे नहीं की हुई कि उन्होंने ऊपर कोई सीमेंट या कुछ ऐसे लगा के उसको रखा हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है. इट्स जस्ट नेचुरली ऑर्गेनिकली बीन देयर. लेकिन देयर वाज नो सच एन इंसिडेंट. And it's nice, it's beautiful. For the first experience it was really calm. It was very quiet inside the cave, so a lot of people from different places were there. काफ़ी ह्यूज जगह है यहाँ पे. साइड पे एक टेंपल बना हुआ है, उसके जब आप एंटर होते हैं तब आपको गार का ये बेसिकली मिडल पार्ट है, और वो बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं उधर भी आप क्लाइंब अप करके, दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ द केव. सो यू हैव टू लिटरली वॉक ऑल आउट एंड यू हैव टू लिटरली लाइक काइंड ऑफ क्लाइंब अ लॉट ऑन द डिफरेंट स्टेयर्स. लेकिन थोड़ा आप वहाँ बैठो, टाइम स्पेंड करो. दे हैव दोज बेंचेस ऑल अराउंड. अगर आपने बैठ के थोड़ा सा मतलब यू वांट टू काम डाउन अ लिटिल बिट, इट्स रियली नाइस. अगर आप थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे महसूस करो कि हाउ डज इट फील बीइंग इनसाइड द माउंटेन. काफ़ी खूबसूरत लगता है जब आपको ऐसे ऊपर डिफरेंट पैचेस बने हुए हैं जहाँ से आपको ना सनलाइट आ रही है नीचे. एंड देयर वाज वन पॉइंट वेदर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवीली. सो अगर तब तक मैं नीचे जा चुका था, लेकिन वुड हैव बीन ब्यूटीफुल अगर मैं वो कैप्चर करता. यहाँ से आप देखें, इमेजिन करें कि रेन जो है ना वो पोर नीचे आ रही हो, तो वुड हैव बीन रियली नाइस. And this is what they have another temple. You see how traditionally and culturally people are coming there and praying the way they like, and nobody really bothers and nobody is really like into it why they are there, so which is nice, good. ये देखेंगे पत्थर जो है ना सारे, इट्स जस्ट हैंगिंग फ्रॉम द केव इटसेल्फ. तो वो कभी भी गिर तो सकते हैं, लेकिन नॉट श्योर हाउ इट्स बीन प्रोटेक्टेड. यहाँ पे माउंटेन से वहाँ पे आपको ड्रिंकिंग वाटर जो है ना उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है. यू कैन लिटरली ड्रिंक द वाटर, फ्रेश वाटर दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द माउंटेन. इट वाज रियली नाइस. कोल्ड. This is also part of the temples that they have inside, nicely decorated, and they had sort of the praying going on, so they were playing some music, and was a lot of people all still around. And here I met my best friend, and here we go. Look at him, how beautiful he is. He was quite friendly actually. At one point he was really aggressive, like, and then he was okay later on when we got him some food. So this was a time we visited the cave. उस cave को visit करने के बाद started coming down from the stairs, और इधर जो है ना weather बिल्कुल थोड़ा change हो गया, and then it was started raining, and raining like out of sudden it was like very heavy rain.
And उसके बाद we wanted to visit and to this Genting Twin Towers. लेकिन before that we wanted to try the fresh coconut and I saw it there. Somebody was selling it, so we just wanted to give it a try. And once the coconut water, it was actually really nice, really nice, very organic. आपके सामने वो बिल्कुल काटते हैं and आपको literally with the straw and the water was really good, very refreshing. After all that hike and you literally needed some water and this was a perfect hydration. और उसके बाद हमने वहाँ से फिर से टैक्सी ली and we started going to this Twin Towers and it was again back to the city center. बारिश जो थी वो रुक चुकी थी because it was really literally for a short period of time. And shortly after it was a traffic, लेकिन again we arrived there. It was nice, beautiful view. यहाँ पे जो है ना पहले भी मैं काफ़ी देर पहले जा चुका हूँ, लेकिन this has been changed, the place has been changed quite a lot. It's really beautiful now. And this iconic Genting Towers and the Twin Towers, Patron Towers you can call it. और यहाँ पे पेट्रोनास टावर में मतलब लोग कम हैं, लेकिन उसके साइड पे मैं आपको दिखाता तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली. इट्स नाइस क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़. लोग जो है ना अपने कैमरे और एलईडी फ्लैश लाइट्स लेके वहाँ पे खड़े हुए हैं एंड दे आर लिटरली offering you अगर if you want to take a picture right in front of that. And of course a lot of people they do that, जो people who मतलब couples में आ रहे हैं या जो अपने honeymoons में आए हैं या जो अपने families के साथ आ रहे हैं, for them it's really nice place. लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे वो जो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे थे, एक्चुअली they were more than the tourists there. तो at one point it was quite annoyed because every second person जो ना आपके पास आ रहा है कि भाई आपको पिक्चर्स लेनी है, which is okay. I mean they are earning their bread and butter, but there are in a many numbers, so you literally are walking around and they literally approach you for every 1 second. Otherwise it's a beautiful experience. You have a places to take a picture if you want to take a selfie, and they have made a nice place where you can literally stand. And then right after that we went inside that towers. There is a shopping mall. तो शॉपिंग मॉल ऑब्वियसली द सेम यूजुअल जैसे होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स आर देयर. यहाँ पे कोई चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से दे हैव दिस लिटिल स्टॉल्स डाउन जहाँ पे वो चाइनीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. एंड दे हैव दिस फाउंटेन शोज आउटसाइड. Stay with me, you will see later. It's very similar, like a mini version of Burj Khalifa you can call it. तो वो वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन्स से एंड द एलईडी लाइट्स उन्होंने यूज़ की हुई हैं वहाँ पे. इट्स रियली ब्यूटीफुल क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ग्रीन है ऑल अराउंड दैट एरिया. इट लुक्स रियली नाइस. दे हैव यूज्ड दिस ग्रीन एलईडी लाइट्स टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस. एंड द वाटर फाउंटेन शो, इट जस्ट मेक्स एन एड ऑन एक्सपीरियंस रियली ब्यूटीफुल. It was in fact really nice. The music was really good. It was very beautiful. Petronas Towers के बाद we walked around a little bit outside. उसके बाद we decided it's a time for some food, so we asked some local people there कि what is their recommendation, क्योंकि मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था.
तो आई काइंड ऑफ शेयर यू स्टोरी। वहाँ पे जो है ना एक तो फीमेल बैठी हुई थी एंड दे वर एंजॉयिंग देयर फूड, सो वी अप्रोच दैम कि आप क्या रिकमेंड करते हो यहाँ पे, कहाँ पे जाया जाए खाने के लिए। सो आई कैन नॉट बिलीव लाइक हाउ काइंड दे वर। सो दे लिटरली यूज यूर देयर ओन फ़ोन, और उन्होंने हमारे लिए वहाँ पे जो है ना ग्रैब, इट्स टैक्सी ऐप जस्ट लाइक हमारे पाकिस्तान में ऊबर और करीम है। तो वहाँ पे जो है ना वो द प्लेस इट्सल्फ, द टैक्सी ऐप इज़ कॉल्ड ग्रैब। ग्रैब इज़ बेसिकली आप वन स्टॉप शॉप है, आप वहाँ से ऊबर भी बुक कर सकते हो, ये गाड़ी बुक कर सकते हो, आप वहाँ पे ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक फूड पांडा इन पाकिस्तान। तो दे बेसिकली हेल्प अस टू बुक अ कैब, और उन्होंने जो है ना वहाँ पे कैब में ही उन्होंने डेस्टिनेशन भी डाल दी अपने ही फ़ोन से कि भाई यू कैन लिटरली गो टू दिस प्लेस, दिस इज़ रियली नाइस। एंड गेस व्हाट, व्हेन वी गेट ऑफ द टैक्सी, हमने पूछा यार कितने पैसे हो गए, बोलता यार आपके पैसे उन्होंने जो है ना वो पे कर दिए हैं। सो दिस वाज रियली रियली नाइस, यू नो, यू फील लाइक ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन दे वर रियली रियली काइंड। सो समहाउ वी आस्क्ड द ड्राइवर कि अगर आप उनका नंबर शेयर कर दो, एंड देन दे ही वाज नॉट बेसिकली अलाउड टू शेयर अ नंबर, and then we texted them through the driver's app कि thank you so much for your kindness। even though पैसों की बात नहीं होती, लेकिन कितने पैसे तो थोड़े से वहाँ से ट्विन टावर से इधर आने के फूड स्ट्रीट में, लेकिन she was really kind, both of them were really kind। they said you guys are our guests and please enjoy your food, and that's nothing much। so that was, you know, it makes you feel like you know, people are still kind and in this materialistic world। so here we arrived in this food street, the place is called Jalanor। यहाँ पे जो है ना काफ़ी डिफरेंट सी फूड रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। एवरीवेयर इज़ अ मलेशियन फूड, चाइनीज़ फूड, थाई फूड। आपको बेसिकली द प्लेस इज़ buzzing with a lot of restaurants, a lot of tourists all around। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लोगों का। सो आई विल टेक यू टू द रेस्टोरेंट। आई वाज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आपको हर किस्म का खाना मिलता है। यू कैन लिटरली हैव अ पोर्क, यू कैन लिटरली हैव अ फिश, यू कैन हैव अ हलाल फूड। सो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग दैट आई कैन गो एंड ईट सम हलाल फूड देयर। सो वी फाउंड वन प्लेस, लेकिन खाना जो है ना ओवरऑल इट वाज जस्ट ओके। आई मीन आई वोंट रियली be exaggerating कि it was delicious and whatsoever, लेकिन it was just okay because I understand यहाँ पे जो है ना एक तो द लोकल जो है ना शेफ्स वो यहाँ पे नहीं है। दे हैव ऑल बेसिकली expatriate that are working inside the kitchen, so the flavors and the authentic food is does not exist। अगर आपने authentic food खानी है तो देना you have to go for look for different places जहाँ पे आपको authentic Malaysian food मिलेगी। यहाँ पे जो है ना इट वॉज जस्ट ओके बिकॉज ऑफ द लार्ज वॉल्यूम एंड द अमाउंट ऑफ पीपल। आपको लिटरली एट वन पॉइंट इट्स रियली गेट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ टेबल इवन। तो हम जो ना वो टेबल वो उनसे पूछ रहे थे अगर कोई बाहर टेबल है तो, एंड देयर वाज नॉट अवेलेबल सो वी हैव टू रियली sit on somewhere on the corner which is still outside लेकिन on the side। I ordered this watermelon and lychee यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। वाटरमेलन जो है ना वो काफ़ी फ़्रेश है। आपको यहाँ पे शुगर कैन जूस जो है वो काफ़ी फ़्रेश मिलेगा। कोकोनट आइसक्रीम आपको यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मिलेगी। एंड दिस इज़ वाई आई ऑर्डर्ड, इट वाज मोर ऑफ लाइक अ चिकन फ्राइड राइस, देन आई ऑर्डर दिस नूडल्स, what was it, I forgot the name, but it was just okay। Again, my friend, they had this prawns and this other dishes, they were a little bit spicy, lekin it was okay। the food overall was nice, and this is fresh oyster। if you're a fan of oyster, it's really nice and healthy at the same time। it was okay, the food was nice, that's it। we just had to fill up the stomach, I didn't want to waste the food। and then after that we started walking again। उसके बाद जो ना दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपन। आई वांटेड टू ट्राई देयर कोकोनट आइसक्रीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोकोनट ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लार्ज फ्लेवर्स में मिलता है और लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, तो इट हैज़ टू बी गुड। सो दिस जेंटलमैन वाज रियली काइंड इनफ, द ओनर जो था ना, उन्होंने ये आपको वो फ्रोज़न कोकोनट शेल है, उनकी प्रेजेंटेशन देखें आप, फ्रोज़न कोकोनट शेल लिया उन्होंने फ्रीज़र से। उसका मतलब ये है कि ये जो है ना उसके ऊपर जब वो आइसक्रीम डालेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगी। उसके अंदर उन्होंने मैंने आई आस्क्ड देम टू फ्लेवर्स, तो दे हैड मैंगो भी वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं और कोकोनट भी। तो ही एडेड बोथ बेसिकली 2 scoops ऑफ मैंगो, 2 scoops ऑफ कोकोनट, एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। एंड द आइसक्रीम वो जो शेल है वो फ्रोज़न है, वहाँ से फ्रीज़र से निकाला है। ऊपर दे ऐड ऑन दिस एवरीथिंग इज़ बेसिकली कोकोनट। वहाँ पे वो रोस्टेड कोकोनट है, वो बिस्किट भी रोस्टेड कोकोनट के हैं।
and they present you in this coconut shell, which is very authentic. And to be honest, I must say that despite the not happy with the food, this was one of the best thing I ate. The coconut and mango ice cream you must try if you ever go to that street, and it was really delicious. And you can see how it ended up. And it was quite a walk. It was tiring, and then it was time for some foot massage. There was this place in the same street. They had this place for the foot massage. It was really nice. We went there with our colleagues and had this foot massage. It was really good, nice and relaxing. And after that, we walked around in the city. There were a lot of different restaurants still. A friend of mine, he wanted to try this Arabic shawarma. There's very famous Damascus and Iraqi shawarma. So he had this Iraqi shawarma from there, which was shawarma, like an Arabic style, but really nice. And this area here is basically is called Arabic Street. So जहाँ पे वहाँ आपको different sort of shawarma, Arabic food, halal food. So काफ़ी rush होता है यहाँ पे रात के time. It was really nice. They had all these restaurants next to each other, was serving some really authentic, some Iraqi, Syrian, and some Middle Eastern food. Overall, it was a nice day, and after that, I was really tired. It was time to go back, and from there, we took a taxi back to the hotel. And next day, it was time to come back once again. It was raining. Thank you for watching this vlog. Until we meet next time, take care and Allah Hafiz.